गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो रियलिटी में क्वाड्रेटिक नहीं है, बट वी कैन रिड्यूस और यू कैन से चेंज द इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयर आर 3 or 4 टाइप्स in this exercise. First of which is 9x raised to power 4 plus 20 is equal to 29x square. अब क्योंकि इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 4 है, दैट्स वाई इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन बच्चों जब कभी भी पावर 4 और उसका हाफ 2 है, जैसे पावर 6 या पावर 3 में हो, पावर 8 या पावर 4, मीन्स आई वांट टू से जब कभी भी एक पावर कितने होते और फिर उसकी हाफ पावर भी आपको अगर दिखाई दे रही हो, सिर्फ वो पावर और उसकी हाफ पावर दिखाई दे, तो आपने ऐसा काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। कैसे? पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एनी अदर वेरिएबल, लेट इट इज वाई। नाउ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू 9y square. Why? Because x raised to power 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x square का square, and x square is equal to y. That's why it is y square. Okay. Now the equation is 9y square plus 20 minus 29y. That's equal to 0. And again it is 9y square minus 29y plus 20 is equal to 0. Now it is a quadratic equation. ये हमने कल पढ़ा था कि quadratic equation को solve करने का तरीका क्या था? Splitting the middle term. Now the sum should be equal to 29 and the multiplication should be equal to 180 and the factors will be 20 and 9. Therefore the equation will be 9y square minus 20y minus 9y plus 20 is equal to 0. Now taking y is common in the first two terms and last two terms में जो common होगा, in this first two terms y is the common and it will be 9y minus 20. Minus 1 is the common. Note this step, this sign will be always the common if it is minus. Minus 1 is the common and the equation will be 9y minus 20, that's equal to 0. Now taking again common, from these two, 9y minus 20 is common and this will be 9y minus 1 is equal to 0. From here either 9y minus 20 is equal to 0 or y minus 1 is equal to 0. From here you will get y is equal to 20 by 9 and from here you will get y is equal to 1. These are the two roots of the equation which is in y, but y is your own position, that's why it will not be the answers. Put the value. What is y? Y is equal to x square, therefore x square is equal to 20 by 9 and x will be equal to under root of 20 by 9. Undo 20 to the 4, 5 are 20, it means 2 root 5 upon 3 and the sign will be positive and negative both. From here y will be equal to 1 and x square will be equal to 1, x will be equal to under root 1 and that's equal to plus minus 1. That's why we have 4 answers. Plus minus 2 root 5 by root 3, 2 root 5 by 3, sorry, and plus minus 1. This equation has 4 answers. Why? Because the highest power is 4. तो यहाँ नोट करने वाली बात ये है, जब किसी भी इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 रूट्स होंगे, किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 रूट्स होंगे, 4 पावर हाईएस्ट है तो उसके 4 रूट्स होंगे। ओके, अंडरस्टैंड? Now the next type is something like this: x square minus 3x whole square
-16 into x square minus 3x माइनस 36। इस टाइप की पहचान क्या है कि यहां पर आपको कोई सेम एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगी, उसकी पावर्स अलग अलग होंगी। तो जब कभी भी इस तरह की दो चीजें सेम दिखाई दे तो उस इक्वेशन में आपने उसी चीज को जो बार बार दिखाई दे रही है आपको उसको पुट कर देना है। इट मीन्स पुट x square minus 3x, that's it is equal to y. Now the equation will become y square, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को y पुट किया है, -16 y minus 36 is equal to 0. Now it is quadratic equation, जिसको हमने कल भी सोल्व किया था, पहले भी सोल्व किया काफी, splitting the middle term. The sum should be 16 and multiplication should be 36. So 18 to the 36. It means y square minus 18y plus 2y minus 36 will be equal to 0. First two terms में common, last two terms में common. Now y is the common, y minus 18, 2 is the common, y minus 18 is equal to 0. Again y minus 18 is common and y plus 2 is equal to 0. From here you will get y is equal to 18 and y is equal to -2, but y cannot be your answer. That's why put the value of y again. What is y? Y is x square minus 3x. Put x square minus 3x is equal to 18. X square minus 3x minus 18 is equal to 0. Again splitting the middle term, -3 should be the sum, multiplication should be -18, 6 3 is 18. तो x square minus 6x plus 3x minus 18 is equal to 0. Again taking the common in first two terms and in last two terms. I think you can do it. Similarly put the value here, x square minus 3x. Why? Because y is equal to x square minus 3x, that's equal to -2. X square minus 3x plus 2 is equal to 0. Again it is a quadratic equation and the factors will be x square minus 2x minus x plus 2 is equal to 0. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर सकते हैं. Do it. Now the next type is 4 raised to power x minus 3 into 2 raised to power x plus 2 plus 32 is equal to 0. In this type you will get the powers in variables, and in these equations first of all try to do the same, you can say the, what you will say, constants and variables. You can write 4 raised to power x like this, 2 raised to power x whole square minus 3 into 2 raised to power x into 2 raised to power 2. क्योंकि अगर बेसिस सेम है तो पावर साइड हो जाती हैं, और अगर पावर्स एडिशन में है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं. प्लस 32 इज इक्वल टू 0. सिर्फ एक ही स्टेप करने के बाद आपको बड़ा साफ साफ दिखाई देगा कि 2 रेज टू पावर x आपको बार बार दिखाई दे रहा है या 2 बार दिखाई दे रहा है. इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पुट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y. नाउ द इक्वेशन विल बी y स्क्वायर माइनस 2 raised to power 2 4 into 3 12 and this is y minus 12y plus 32 is equal to 0. Now it is quadratic equation and you can do it easily. The sum should be 12, multiplication should be 32, 8 and 4. It will be y square minus 8y minus 4y plus 32 is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म्स में कॉमन. फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन होगा, y एंड इट विल बी y माइनस 8. नेक्स्ट टू टर्म्स में माइनस 4 विल बी द कॉमन एंड इट विल बी y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ y माइनस 8 इज कॉमन,
y minus 8 common, and it will be y minus 4 is equal to 0. From here you will get y is equal to 8, and from here you will get y is equal to 4. But what is y? Y is 2 raised to power x. That's why it is 2 raised to power x is equal to 8. अब आपने इस आंसर को 2 की पावर में लिखना है. 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 3, and when the bases are same and they are equal, it means the powers will also be equal. It means x is equal to 3. From here you will do, put the value of y. 2 raised to power x is equal to 4. 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 2, and x will be 2. These two are the answers. Okay. Now the third type you have done. Now the fourth type. In this type you will see the questions in the form of under roots. इस टाइप में आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे. फॉर एन एग्जांपल, अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू x. ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक टर्म के ऊपर पूरा अंडर रूट दिखाई देगा. जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो जिस टर्म के ऊपर अंडर रूट है उसको एक साइड रखो, बाकी सभी टर्म्स को एक साइड पर रखिए. जैसे कि अंडर रूट x प्लस 9 यहां इज इक्वल टू ये x माइनस 3. ये स्टेप करने के बाद आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देना है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो इट विल बी x प्लस 9, और जब आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो x माइनस 3 होल स्क्वेयर. x प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab. नाउ द इक्वेशन विल बी x square minus 6x plus 9 on this side minus x and minus 9 will be equal to 0. X square minus 7x and it will be cancelled. This is equal to 0. Taking x common, x minus 7 is equal to 0. From here you will get x is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0. This is your answer, and from here x is equal to 7 is your answer. Okay, this is the next type. Now the next type is जब आपको एक ही क्वेश्चन में दो टर्म्स के ऊपर अंडर रूट दिखाई दे. फॉर एन एग्जांपल, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 5. ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो टर्म्स के ऊपर अंडर रूट दिखाई देगा. तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक टर्म जिसके ऊपर अंडर रूट है उस अकेले टर्म को एक साइड रखिए, बाकी सभी टर्म को दूसरी साइड रखिए. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, 4 माइनस एक्स इधर हो गया इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 9. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे लाइक दिस, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस एक्स, ये क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. 2ab मीन्स 2 5 10 एंड इट विल बी x प्लस 9. ये स्टेप करने के बाद आपको सिर्फ एक टर्म के ऊपर रूट दिखाई देगा. वहां पर आपने उस अंडर रूट वाली टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ रखना है. देन इट विल बी 4 माइनस एक्स माइनस 25 माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 10 रूट ऑफ x प्लस 9. नाउ इट विल बी minus x minus 2x, and it will be 25 9 34 minus 30 is equal to minus 10 under root x plus 9. Minus 2 is divisible by this, minus 2 is divisible by this, minus 2 is divisible by this. So dividing throughout by minus 2, and your equation will be x dividing by minus 2 it will be plus 15, and dividing by minus 2 will be equal to 5 under root x plus 9. Now
Again, now this is the last question. Previous question we have done squaring both sides again, and it will be x plus 15 whole square is equal to 5 under root x plus 9 whole square. It will be a square plus b square plus 2ab, that's equal to 5 square 25 into x plus 9. On left hand side, x square plus 225 plus 30x is equal to 25x plus 225. Now 225 will be cancelled by 225, and the equation will be x square plus 30x minus 25x is equal to 0, and it will be x square plus 5x is equal to 0. X is the common, x plus 5 is equal to 0. From here you will get x is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. One of the answer is x is equal to 0 and the other answer is x is equal to minus 5. Okay, do it.